So friends, welcome to the series of Pi Network updates. अगला जो अपडेट आ रहा है that is from the Pi Network roadmap की तरफ से. You can see Pi Network has a 3-phase roadmap. Phase 3 is split into 2 parts and enclosed mainnet on and open mainnet as well. So you can see phase number 1 is the beta phase. We have phase number 2 as well, which is the testnet, and it was launched in December 2018. And जो तीसरा है that is phase number 3. We are already right now here. तो हम open mainnet से एक phase पहले है अभी, and this phase began in December 21. The enclosed network period means that the mainnet is live, but with a firewall that prevents any unwanted external activity. Pioneers will be able to take the time to KYC and migrate their Pi to the live mainnet blockchain. तो अभी जो है चल रहा है फेज दैट इज द माइग्रेशन प्रोसेस, एंड ताकि mainnet जब लॉन्च हो ताकि एक शॉट में ही सब अपना कॉइन्स को सेल आउट कर सकेंगे ऑन द वेरियस एक्सचेंजेस. सो दैट इज अ कमिंग फ्रॉम अपडेट कमिंग फ्रॉम दिस Pi network. The open network period will begin depending on the maturity of the enclosed network ecosystem and the progress of the network's KYC. Open network means that the firewall in the enclosed network period will be removed, allowing any external connectivity, example to the other networks, wallets, and anyone who wants to connect the PiNet. एंड जो अगला अपडेट आ रहा है दैट इज फ्रॉम द KYC नेटवर्क एज वेल. यू कैन सी अगर आपको KYC में कोई इशू आ रही है देन आपके सारे बग्स ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुके हैं. देन यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. आप अपना KYC का प्रोसेस कर दीजिए अपने एंड से, एंड देन ऑटोमेटिकली द KYC विल बी डन. जो प्रीवियसली जो इशू आ रहे थे दैट इज बिकॉज ऑफ द बग्स, एंड राइट नाउ द बग्स हैव बीन रिमूव्ड एंड सारे के सारे KYC के इशू सॉल्व हो चुके हैं. ठीक है. सो उन्होंने ये भी बोला है कि यू मे शेयर विद दिस विथ योर अर्निंग टीम्स मेंबर्स हु आर येट टू अप्लाई फॉर द KYC, एंड when the bug happens, it can happen every time, therefore you might want to do in the normal way unless you encounter the bug yourself. तो भी एज ऑफ नाउ तो उन्होंने काफ़ी सारे बग्स को रिमूव कर दिया है. स्टिल यू आर फेसिंग द बग एंड द KYC इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड. आप खाली पेशेंट रहिए एंड द KYC विल कंप्लीट वेरी सुन, एंड you just have to be patient in the meanwhile.